Hello everyone, I'm your Vishal Jhabda, back again with our next topic of class 11th. In our previous video, we were start with vectors. Now we proceed with our next topic of vectors. So next is laws of vector addition. ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ triangle law of vector addition. So ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ it states that if two vectors can be represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in the same order, then the resultant is represented completely by the third side taken in opposite order. Means to say ਦੋ sides ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ same order ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਬਟ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਟ ਸਟੇਟਸ that when two vectors can be represented ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ So now एक there are two vectors. suppose एक p vector है कोई line represent कर रही है and this is a q vector. So according to triangle law अपन की करना solve करना so taken one side and another side vector p and q. So now अपन गल की थी it states that when two vectors of its magnitude and direction taken in the same order of two sides of triangle and the third side ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਟੇਲ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਟੇਲ ਇਹਦੇ ਹੈਡ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਟੇਲ ਨਾਲ ਟੇਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਡ ਨਾਲ ਹੈਡ ਮੀਨਸ ਜਿਸੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ABC. So the AB is equals to AB vector क्या होगा P vector BC होएगा अपना Q vector तो the resultant क्या होएगा अपना AC is R vector. So according to triangle law of vector addition R is equals to P plus Q. ये अपना की है addition form ਦੀ term है ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ थर्ड ਉਹਦਾ opposite order ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ triangle law of vector addition R is equals to P plus Q, the addition of two vector in the form of triangle. ਹਾਂਜੀ now the next law is parallelogram law of vector addition. It states that if two vectors ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ vectors ਨੇ acting simultaneously मतलब same side at a point can be represented both in magnitude and direction दोनों represent कर रहे ने magnitude ਦੀ direction ਦੇ form ਦੇ ਵਿੱਚ by the two adjacent sides of parallelogram. Adjacent side मतलब ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ joins ਹੋਣੀਆਂ two sides ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ the resultant is represented completely by the diagonal of parallelogram passing through that point. ਤੇ ਜਿਹੜਾ resultant ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ represent ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ diagonal represent ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ parallelogram of vector addition. हाँ जी, कंसिडर करते हैं आप क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. Now let us find the resultant of two vectors P and Q with the help of parallelogram law of vector addition. So when we take one vector P vector, so AB P vector हो गया अपना. Similarly, adjacent side से अपन क्या लेना थी? Second vector means to say tail of one vector is coincide with tail of P vector. Tail of Q vector is coincide with tail of P vector, and this point is D. In parallelogram, the opposite sides are also equal. So it can be represented by this. This is also Q vector, and this is P vector. So the resultant is represented with help of diagonal R vector. So according to parallelogram of vector addition or triangle law of vector addition,
P and Q are in same order, resultant is in opposite order, so R is equals to P plus Q. So resultant is represented from both the sides. R is equals to P plus Q. This is the parallelogram of vector addition. So again I will explain. AB is the one vector P, AD is another vector Q, tail is coincide with another vector. Opposite sides of parallelogram are equal, so there is Q and there is P. So resultant is represented by the diagonal AC, and R is equals to P plus Q. In both the sides, R is equals to P plus Q according to triangle law of vector addition. So this is the second law of vector addition. Now is a small part. Vector addition is commutative. What is mean by commutative? Commutative means ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ a plus b is equals to b plus a. So a plus b is equals to b plus a. Means to say a ਨੂੰ ਅਗਰ b ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ b ਨੂੰ a ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਲਵੇਸ ਇਕੁਅਲ. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ commutative. Similarly, second part, vector addition is associative. ये दो लॉ ने अपने vector addition दे, ठीक है जी. तो vector addition है जिहड़ा अपना associative है. How it is associative? Associative कदों बोलते हैं अपन? When a plus b vector ਨੂੰ पहला ऐड करना अपन, then with c vector, or is equals to a vector plus b of c vector. किसी भी ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ a और b ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ, then c ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ b plus c ਨੂੰ ਫਸਟ ਐਡ ਕਰਤਾ, then a ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ. ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਔਰ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਦੇਖੋ, now consider with this, with the help of example, let any vector a, I cap, 3k cap, 3j cap minus 4k cap. Similarly, b vector 2i cap, 4j cap minus 6k cap. Now we have to prove vector addition is commutative and associative. दोनों law अपन prove करते हैं. So firstly a plus b कर दो जी. So a ने जो तो b ने ऐड किया था, ऐड करो सिंपली i plus, पहला आप सिंपली लिख लेंगे सारे 3j 4k plus 2i cap plus 4j cap minus 6k cap. तो ये एडिशन आ गई जी. 2 plus 1 3i cap, 3 plus 4 7j cap, and minus 4 minus 6 minus 10k cap. This is the a plus b. Similarly b plus a करो, so 2 plus 1 again 3i cap, 4 plus 3 again 7j cap, and minus 6 minus 4 again minus 10k cap. So a plus b is equals to b plus a. So the vector addition is commutative. Similarly we have to prove this. So firstly a plus b अपने को हो गया. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ c vector ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ. So we have take c vectors, any vector, 4i cap, 3j cap minus 2k cap. So जी c vector ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ. ਹੁਣ a plus b ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ c ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦੋ a plus b plus c. this line prove कर रहे हैं. तो देखो 3 plus 4 7i cap, 7 plus 3 10j cap, and minus 10 minus 2 minus 12k cap. So अगर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀਏ, तो ਪਹਿਲਾਂ b ਨੂੰ c ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੋ, तो b plus c आ जाएगा जी अपने को. b plus c की आ जाएगा, देखो 2 and 4 6i cap, 3 and 4 7j cap, and next is minus 2 minus 6 minus 8k cap. Now add with a plus b plus c. So this is right hand side. So a ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. So 6 plus 1 7i cap, 7 plus 3 10j cap, and minus 8 plus minus 4 12k cap. So left hand side is equals to right hand side. ये अपने की हो गए, इक्वल हो गए दोनों.
So vector addition is associative. Now दोनों law with the help of example easily की करता prove करता vector addition is commutative and vector addition is associative. So now we have to prove with the next topic. Now the third law of vector addition is that Polygon law of vector addition. So it states that if a number of vector can be represented in magnitude and direction by the sides of polygon. By the sides of polygon. Polygon means 4 तो जी ज्यादा sides होनी है. Taken in same order, then their resultant is represented by. Resultant represent होएगा क्या होएगा? Closing side of polygon taken in opposite order. So it states that when number of vectors represented in magnitude and direction by the sides of polygon taken in same order, then their resultant is represented by closing side of the polygon taken in opposite order. So we have to consider this law with the help of diagram and their expression. So firstly देखो ध्यान दो. Here is a vector P, another vector Q, another vector S, the R. Here is a vector S vector. So the last is resultant vector taken as opposite, and this is N vector. So it is the Polygon law of vector addition, and N vector is equals to P plus Q plus R plus S. ये नो प्रूव कर सकते हैं with the help of triangle law of vector addition. So firstly देखो इन्होंने नेमिंग करो A B C D E. So firstly draw this line and represented by, इनको कोई भी नाम दे दो अपना G वेक्टर दे देते अपन. सो P वेक्टर एंड Q वेक्टर दोनों के हो गए सेम ऑर्डर दे विच, G वेक्टर के हो गए ऑपोजिट ऑर्डर विच. अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन P प्लस Q is equals to G vector. So equation number 1. Now take another side H vector. So according to triangle law of vector addition, ACD are again triangle. G and R are two vector in same order and H vector in opposite order. So G plus R is equals to H vector. Equation number 2. So using 1 in 2 number G की वैल्यू से पुट कर दो, अपने को बन गया P plus Q plus R is equal to H vector. So according to again triangle A, D and E, H vector and S vector are in same order. So H plus S is equals to N vector. So using equation 3 in 4, so N vector is equals to P plus Q plus R plus S. So this is called Polygon law of vector addition, when number of vectors represented both magnitude and direction in the sides of polygon, and the resultant vector is the last side or a closing side of the polygon taken in opposite order N. So this is equals to addition of all the vectors. So this is the third law of vector addition, Polygon law of vector addition. So one next topic is analytic method of triangle law of vector addition. उनको consider करते हैं. So our next topic is analytic method of vector addition. So firstly we will proceed with the triangle law of vector addition with the analytic method. So take a triangle. Triangle law de vich aapa banai triangle ji apni. So this is a P vector. Here it is Q vector, and this is the resultant vector R. So do we have to find the magnitude of R? Now by the find कर रहे हैं R the magnitude with analytic method. So draw this line. This is the perpendicular. So here it is a 90-degree angle. A, B, C, and E vector. So P vector, Q vector, R vector. So take a triangle in triangle ACE. So according to Pythagoras, AC square
इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड ले लिया आप डायरेक्ट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE दा स्क्वायर प्लस CE दा स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाँ जी A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ AB plus BE। सो AB plus BE the square plus CE the square। So take care identity लग गई जी अपने इथे A square plus B square plus 2AB into BE plus CE the whole square। सो नेक्स्ट देखो जी हम अपने AC की वैल्यू की है अपने को R वेक्टर R स्क्वायर AB की वैल्यू P वेक्टर P स्क्वायर BE की वैल्यू अपन को पता नहीं तो इन्हों पहले रख लेने BE का स्क्वायर। नेक्स्ट 2AB BE and what is the value of CE। so according to this triangle अगेन अपन जे इस ट्रायंगल को शो करिए तो अपन वैल्यू फाइंड कर लेंगे CE की। सो द ट्रायंगल CE का आ गया जी स्क्वायर आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CE अकॉर्डिंग टू देखो एंगल ले लेना अपन हेड एंगल थीटा हेड एंगल बीटा। सो द थीटा देखो सो cos थीटा की हुंदा अपने को एंगल दे सामने परपेंडिकुलर 90 सामने हाइपोटेन्यूस थर्ड वन इज बेस। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अपन टेंस दे विच कीता। सो BE अपॉन CE BE अपॉन सॉरी बेस परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो BE अपॉन BC BE अपॉन BC। सो वैल्यू आ गई अपने को BE दी BC cos ऑफ थीटा BC cos ऑफ थीटा इतने वैल्यूज पुट कर देने जी अपन अपने को आ गया R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस BE दा स्क्वायर plus CE the square plus 2AB BC cos of theta। Again according to this triangle CEB इसे पाइथागोरस लगाइए जी अपन। सो ट्रायंगल इन्हें नंबर दे दो अपना 1 नंबर। सो ट्रायंगल CEB हाँ जी CEB दे विच पाइथागोरस लगाइए तो आप अपने को बनेगा CB दा स्क्वायर और BC दा स्क्वायर is equals to BE square plus CE दा स्क्वायर। सो देखो इधर बन रहा है BE दा स्क्वायर प्लस CE दा स्क्वायर इन्हें दोनों की जगह पे की यूज हो जाएगा BC दा स्क्वायर। सो देखो क्या करते हैं नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर हाँ जी इन्हें दोनों की जगह पे आ जाएगा अपने को BC दा स्क्वायर प्लस 2AB BC cos ऑफ थीटा। सो देखो BC की वैल्यू की अपने को Q वेक्टर अपने को R आ गया जी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। सो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन विद एनालिटिक मेथड। हाँ जी मैग्नीट्यूड आ गया ਹੁਣ रहेगी डायरेक्शन तो अपन डायरेक्शन फाइंड करते हैं इस ट्रायंगल की। सो देखो सो नाउ देखो ध्यान नाल इस डायग्राम दे विच जेड़ा अपना रिजल्टेंट वेक्टर है वो P वेक्टर दे नाल एंगल बना रहा है बीटा। सो द डायरेक्शन की होएगी अपन डायरेक्शन ਨੂੰ हमेशा शो करते हैं tan एंगल दे नाल tan बीटा इन ट्रायंगल AC and E। सो 90 दे सामने हाइपोटेन्यूस दिस वन इज परपेंडिकुलर सॉरी दिस वन इज बेस and this one is perpendicular। So tan is equals to perpendicular upon base AE। So CE की वैल्यू A ने ओपन कर दो जी अपना AB प्लस BE हाँ जी CE की वैल्यू की है अपने को। So what is the value of CE अपन ट्रायंगल लॉ को फाइंड कर सकते हैं अगेन sin थीटा इज इक्वल्स टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर CE अपॉन हाइपोटेन्यूस BC। So CE is equals to BC sin थीटा। सो पुट कर दो जी CE की वैल्यू BC sin थीटा। सिमिलरली AB की वैल्यू अपन को पता ही है। नेक्स्ट इज BE। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BE अपन लास्ट अपनी लास्ट दे विच फाइंड कीता सी cos थीटा
इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BE अपॉन BC। सो BE आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BC cos of theta। तो इसकी वैल्यू कैसे पुट कर दो BE दी BC cos of theta। सो अपने को आ गया BC की वैल्यू की है Q sin theta P प्लस Q cos theta। ये आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन। फर्स्टली ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ परपेंडिकुलर ड्रॉ ਕੀਤਾ, देन फर्स्टली ट्रायंगल लिखती ACE अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लगाया AC इज इक्वल्स टू CE प्लस AE। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਮਾਲ ट्रायंगल ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ डायरेक्शन ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ y upon x ਹੁੰਦਾ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ CE upon AE y वेक्टर upon मतलब y कोऑर्डिनेट upon x और सिंपली बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस CE अपॉन AE। CE की वैल्यू पुट करती sin थीटा, तो C sin थीटा इज इक्वल टू CE by BC, CE is equals to BC sin theta and cos theta is equals to BE by BC, BE cos theta। so दोनों की वैल्यू तो पुट करके this is the direction and this is magnitude of triangle of vector addition। now there are three special cases। special case, so firstly when theta is equals to 0 degree means to say ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ when theta is equal to 0 तो पुट कर दो दोनों इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ r ਹਾਂਜੀ cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ p square plus q square plus 2pq। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ a square plus b square 2ab, that means p plus q ਦਾ whole square ਉੱਪਰ ਦਾ ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ p plus q। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ tan beta sin theta ਜੀ sin 0 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 0, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ theta is equal to 90। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, राइट एंगल टू ईच अदर। सो cos 90 कितना होता है 0। सो अपने को r वेक्टर आ गया जी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज cos 0 cos 90 0 sin 90 1, तो q बाय p एक ही आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ tan बीटा ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ perpendicular to each other and the last is 180 when the vectors are act in opposite direction। So put the value of cos 180, so cos 180 is equal to -1, so p square plus q square minus 2pq, again this is identity p minus q the whole square under root, so बन गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ p minus q r ਦੇ ਬਰਾਬਰ and what is the direction, so sin 180, again sin 180 is 0, so beta is equals to 0, so the direction is 0। हाँ जी इन एक किसी अपने तीन स्पेशल केस ही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ जी नो ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਰਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स। और एक वेक्टर अपन 2 न्यूटन देता है, एक वेक्टर 3 न्यूटन देता है और द रिजल्टेंट कितना है 4 न्यूटन। मींस टू से P is 2 न्यूटन, Q is 3 न्यूटन, R is 4 न्यूटन। तीनों अपने को वेक्टर्स है ने ਆਪਾਂ फाइंड करना एंगल। सो फार्मूला अपन पता है P square plus Q square plus 2PQ cos of theta। so values put करो 4 is equals to अच्छा P की वैल्यू 2 the square 4, 3 the value 9, 3 and 2 6, 6 and 2 12 cos of theta। so square कर दो both side, इधर आ जाएगा 16, 9 and 4 13 plus 12 cos of theta। 13 उधर जाके हो जाएगा माइनस, so cos theta 12 cos theta is equal to 3 and cos theta is equal to 3 by 12, that means 0.25। so इसे अपना थीटा फाइंड हो के आ जाएगा 71 डिग्री समथिंग 35 मिनट। सो ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਂਡ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਉਹਦੇ ਮੈਥਡਸ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।